Please be seated. We will begin shortly. Everyone has arrived.
Sir has already arrived. So let's get ready to welcome him and other valuable dignitaries on the dais. Once again, requesting everyone who are standing to kindly be seated. I again remind everyone, let's maintain discipline. Let's be seated. आप सभी से निवेदन है, कृपया अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए. आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ, कृपया अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए. Ladies and gentlemen, get ready to welcome our dignitaries on the dais. I request all of you can be seated. Once Honorable CM and other ministers will come and join us, we can welcome them jointly. As you can see, we have meticulously planned this entire event, and this is dedicated for the growth of entire Odisha, India, and of course, opening new doorways of financial development, employments, etc. What an honor to have all our distinguished delegates. Since we have all our dignitaries, can we have a round of applause from all of you? Just waiting for the arrival of Honorable CM. This is an enriching morning full of
hope, aspiration. Honorable CM has already arrived, along with Honorable Minister of Education, Government of India. I request everyone to kindly rise for national anthem. Nihon daiodan no minasma indo koka no tame gokiritsu kudasai. Can we play? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you so much. Please be seated. Good morning, distinguished guests, ladies and gentlemen. I, Munmun Singh, your host for this very prestigious event, extends my warm welcome to all of you to this landmark occasion at the JSW JFE Steel facility in Sambalpur, a day that represents not just an announcement of a new company, but the strengthening of a partnership built on trust, technology, and shared ambition. Today, we celebrate the coming together of two global leaders, JSW from India and JFE from Japan, united by a common vision to shape the future of steel manufacturing, innovation, and sustainable growth. This ceremony marks a defining milestone in a journey that began almost 20 years ago and now evolves into a new chapter of collaborations, progress and industrial excellence. आजिरो एही गरिमामय अवसररे समस्त अतिथि माननकु आमर आंतरिक स्वागत और अभिनंदन जणाउछु। एही मंच आज उन्नति, नवोन्मेष और सहयोगर एक नूतन कहानी रचना करिबो। ओडिशार एही पवित्र भूमिरु आरंभ होइतिबा एही प्रयास भारतर औद्योगिक यात्रा को आहुरी सुदृढ़ करिबो। For our very special Japanese delegates, Nihon Daihodan Nomi Nasama Indo e Yokusho. We are deeply honored by the gracious presence of our esteemed dignitaries who have joined us to witness this historic moment. Can I request our valuable audience to give a thunderous round of applause? Let's welcome Honorable Chief Minister of Odisha, Sri Mohan Charan Majhi ji. We welcome Honorable Minister of Education, Government of India, Sri Dharmendra Pradhan ji. Honorable Minister, Sri Suresh Pujari ji. Honorable Minister, Sri Ravi Naik ji. Chairman, JSW Group, Mr. Sajjan Jindal, sir. Honorable MLA, Sri Jayanaran Mishra, sir. Honorable MLA, Sri Tankadar Tripathi, sir. Chief Secretary, Government of Odisha, Srimati Anu Garg, ma'am. Consul General, Mr. Yoshihisa Ishikawa. From JFE, President and CEO, Mr. Yoshihisa Kitano. Mr. Parth Jindal, MD JSW. Hiroyuki Ogawa-san from JFE. Mr. Jayant Acharya, Joint Managing Director, JSW Steel, and our very important other delegates, dignitaries present on the dais. Atiti Deva Bhava. Ladies and gentlemen, time has arrived to welcome and felicitate our dignitaries present on the dais. First and foremost, I would be humbly requesting Chairman JSW Group, Mr. Sajjan Jindal, to kindly welcome Honorable CM of Odisha, Sri Mohan Charan Majhi ji. And of course, we need warmth from you all, energy in the form of round of applause, everyone.
This is a true representation of Odisha's rich handloom in the form of uttariya. A fresh flower bouquet as fresh and warm like our wishes. And a very special memento. Thank you. Now I request Mr. Yoshihisa Kitano to kindly welcome Honorable Education Minister, Government of India, Shri Dharmendra Pradhan, sir. I request, sir, we welcome you. I request Mr. Path Jindal to kindly welcome. We have the gracious presence of Mr. Kiichi Ono, our valuable ambassador. Please put your hands together, everyone. I request Mr. Ogawa Hiroyuki to kindly welcome Shri Suresh Pujari, Honorable Minister, Government of Odisha. I request we welcome you, sir. I request Mr. Jayantacharya to kindly welcome Honorable Minister Shri Rabi Naik, sir. I request Mr. Path Jindal to kindly welcome Mr. Yoshihisa Ishikawa. We are indebted and we again welcome His Excellency Kiichi Ono, Ambassador of Japan to India. Can I expect a round of applause from all of you? Everyone, thank you. To begin the formal proceedings, please join me in welcoming Mr. Kaustuv Kulkarni, Group Head, Merger and Acquisitions, Strategic Financing at JSW Steel. I request him to do the context setting. Over to you. Good morning. Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Mohan Charan Majhi ji. Honorable Minister of Education, Government of India, Shri Dharmendra Pradhan ji. Japanese Ambassador to India, His Excellency Ono-san. President and CEO, JFE Holdings, Kitano-san. Our very own Chairman of the JSW Group, Shri Sajjan Jindal ji, CEO JSW Cement and Paints, Shri Path Jindal ji, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. It's my pleasure and privilege today to welcome you all to the inauguration of this landmark joint venture
between JSW and JFE. What we are about to witness today has not been achieved overnight. In fact, it is the culmination of almost 2 decades of collaboration, trust, and shared ambition between the two companies. This joint venture, however, is far more than just a partnership between these two companies. It's a powerful demonstration of how two distinct yet rich cultures can come together, complement each other, and create something truly exceptional. Very few moments are as fulfilling as these, where you can see a once distressed company which we took over in 2021 being transformed into a thriving enterprise under the leadership of the JSW Group. And today, this same company stands on the cusp of becoming a beacon of cooperation between two great nations, India and Japan. Guided by the shared vision of our chairman, Shri Sajjan Jindal, and the JFE President and CEO, Kitano-san, this joint venture is poised to emerge as one of the most technologically advanced steel facilities in the country, contributing meaningfully to the vision of Aatmanirbhar Bharat. And what better place to realize this vision than the mineral-rich state of Odisha? We are confident that this joint venture will make a transformational contribution to the growth and prosperity of this state and its people. Thank you very much. Thank you so much. It is my privilege to invite our visionary leader who has played a pivotal role in building one of India's most respected industrial enterprises, an accomplished business leader who had the foresight to lead the steel industry and JSW in particular on a transformational journey, contributing significantly to India's growth philosophy. He is the force behind transforming JSW into a multi-billion-dollar global conglomerate spanning steel, energy, infrastructure, cement, and new age sectors. He has not only scaled India's steel capacity globally, but also served as chairman of the World Steel Association. Ladies and gentlemen, I feel honored to announce that he was most recently announced by Economic Times as the Businessman of the Year 2025. Congratulations, sir. Please join me up in welcoming Mr. Sajjan Jindal, Chairman JSW Group, for his valuable address. माननीय मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी, आज आपकी उपस्थिति से पूरा संबलपुर, पूरा झारसुगुड़ा और पूरा बीपीएसएल का जो ये प्रांगण है वो बहुत ही उत्तेजित है और बहुत ही खुश है कि आज आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें सम्मान दिया। इससे ये बिल्कुल क्लियरली दर्शित होता है कि आपका इंटरेस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कितना ज़बरदस्त है। आप चाहते हैं कि उड़ीसा जो स्टेट है वो एक प्रगतिशील, एक प्रगतिवान स्टेट है और इसकी बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहिए, इसको बहुत तेज़ी से इसको होना चाहिए। तो आपकी सपोर्ट और आपकी गाइडेंस से ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर लगने जा रहा है। आज ये 5 मिलियन टन का प्लांट है, 4.5 मिलियन टन का प्लांट है और JFE के साथ मिलकर हम इस प्लांट को पहले स्टेज में 10 मिलियन और फिर फाइनल स्टेज में इसको 15 मिलियन टन करने का प्रोग्राम है। इसके साथ में मैं आपको बताऊं कि क्योंझर में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका घर है, तो क्योंझर के अंदर भी ऑलरेडी
7 ग्राम सभा हो चुकी हैं और 5 बाकी हैं। अभी मैं उनसे वही जिक्र कर रहा था। और हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ पर इसके बाद वहाँ पर आएगा। वो किसके साथ आएगा या हम खुद लगाएंगे, उसका हम लोग अभी निर्णय ले रहे हैं। तो जैसे ही ज़मीन, मुझे हेमंत शर्मा जी ने बताया कि मई एंड तक ये ज़मीन का काम पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद हम ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आज मेरे बहुत ही परम मित्र और यहाँ के संबलपुर के जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, वो उनका मेरा नमस्कार है। और वो आज यहाँ पर हम केवल स्पेशल प्रोग्राम बना के आज वो यहाँ पर आए हैं। दिल्ली में, कलकत्ता में उनका प्रोग्राम चल रहा था क्योंकि बंगाल के इलेक्शंस चल रहे हैं, वो प्रभारी हैं वहाँ के बीजेपी की तरफ से। तो पूरा प्रोग्राम को उन्होंने समय निकाल कर आज हमारे साथ, मेरे साथ यहाँ पर आने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया। तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। पहले धर्मेंद्र प्रधान जी, जैसे आप जानते ही हैं कि वो स्टील मिनिस्टर रह चुके हमारे देश के। उसके बाद पेट्रोलियम मिनिस्टर रह चुके हमारे देश का। तो जितने भी इंडस्ट्री की मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो धर्मेंद्र प्रधान जी ने उनको हेड किया है। और अब एजुकेशन मिनिस्टर हैं, क्योंकि हमारे देश में कितने लोगों को मालूम है मुझे पता नहीं, हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट रहा है वो थोड़ा सा कमज़ोर रहा है। हम लोगों ने हमारी अपनी जो एक इतिहास है, हमारे देश का जो इतिहास है, उसको हमने बचपन में नहीं पढ़ा, शायद आप लोगों ने भी नहीं पढ़ा। उसको पूरा चेंज करने का प्रोग्राम धर्मेंद्र प्रधान जी को प्रधानमंत्री जी ने दिया हुआ है और उसके ऊपर काम चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी मेरे से बात की और मेरे दिल के अंदर जो बात थी वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि हमको यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करना चाहिए संबलपुर में। यहाँ पर इतना बड़ा स्टील प्लांट है बीपीएसएल में, जो कि JSW JFE स्टील बनने जा रहा है, 10 मिलियन टन और फिर 15 मिलियन टन। और JFE के आने से हम बहुत हाई क्वालिटी का स्टील बनाएंगे, हम कोई नॉर्मल कॉमर्शियल क्वालिटी स्टील नहीं बनाएंगे। तो वो यहाँ पर डाउनस्ट्रीम का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने जा रहे हैं। मैंने उनको कहा कि आप उसके ऊपर बिल्कुल काम करिए, ज़मीन को डेवलप करके। और वहाँ पर एक बार ज़मीन यहाँ पर डेवलप हो गई तो पूरी दुनिया से, पूरे देश से कितने एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि उनको स्टील मिल जाएगा, उनको एल्यूमिनियम मिलेगा। यहाँ पर 2 बड़े हिंडाल्को का और वेदांता के बिल्कुल लगते हुए, आपको सबको मालूम है, तो लगते हुए बड़े एल्यूमिनियम प्लांट हैं, पावर प्लांट्स हैं, कोयले की खदानें हैं यहाँ पर। तो ये जो एरिया है ये भगवान का दिया हुआ एरिया है। ऐसा पूरा दुनिया के अंदर ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पर ये सारे खनिज एक जगह पर मिलते हो। ये हमारे उड़ीसा की एक खासियत है। हमारे साथ यहाँ पर माननीय श्री सुरेश पुजारी जी भी आए हुए हैं, जो मिनिस्टर रेवेन्यू और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के मंत्री हैं। आज उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पर आने का प्रोग्राम रखा, क्योंकि सब लोग बहुत उत्तेजित हैं, एक्साइटेड हैं कि हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो क्योंकि इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि पूरी उड़ीसा की जो सरकार है और पूरा जो बीजेपी का कल्चर है वो ये है कि वो साथ में मिलके काम करते हैं। मैंने बहुत कल्चर देखा है माजी जी, मैंने बहुत देखा है कि कांग्रेस में कैसे होता था, अगर एक मंत्री आ गए तो दूसरे नहीं पहुंचेंगे, दूसरे आ गए तो चौथे नहीं आएंगे, ऐसा सिस्टम था कांग्रेस के अंदर। लेकिन बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक कल्चर डेवलप किया है, ज़बरदस्त कल्चर है कि एक साथ में सब चलते हैं। इसीलिए हमारा देश एक साथ में तरक्की कर रहा है, क्योंकि कोई अलग अलग उसको पुल एंड पुश नहीं हो रहा है। यही आज मोहन मांझी जी के नेतृत्व में जो उड़ीसा सरकार जो चल रही है, बिल्कुल उसी तरीके से चल रही है। एक बार निर्णय हो गया तो पूरी स्टेट, पूरी मिनिस्ट्री, पूरे एमएलएज, जितने भी विधायक, जितने भी लोग हैं, सब एक साथ में चलते हैं कि भाई ये निर्णय हो गया है, ये डिसीजन हो गया है, अब इसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही भाग्य की बात है कि हमारे पास एक ऐसी सरकार है और ऐसा हमारा नेतृत्व है कि हम
उड़ीसा सरकार को बहुत तेज़ी से, उड़ीसा जो स्टेट है उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें। जब मैं प्लेन में अभी सुबह आ रहा था तो मेरे साथ में जापान के एम्बेसडर उनो-सान मेरे साथ में थे, और किटानो-सान जो कि JFE के CEO हैं वो साथ में थे। तो मैं उनको यही बता रहा था कि उड़ीसा जो है उसके अंदर भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। पानी है, जंगल है, ज़मीन है, काम करने वाले बहुत ही बढ़िया एजुकेटेड लोग हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। संबलपुर में 6 या 7 तो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, तो मेडिकल सिस्टम है, सब कुछ यहाँ पर, हर चीज़ अवेलेबल है। तो ऐसी जगह आयरन ओर है, कोयला है, मैंगनीज है, क्रोमाइट ओर है, सोना भी है और बॉक्साइट है। तो इतनी चीज़ दुनिया में मेरे को नहीं लगता कहीं एक पर जगह पर भी हो सकती है। विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 300-400 किलोमीटर में कोई दुनिया में जगह नहीं है जहाँ पर ये हर चीज़ एक जगह पर मिल सकती है। वो भगवान ने उड़ीसा को दिया है, और इसीलिए मांझी जी ने ये प्रण लिया है कि मैं इस स्टेट को बहुत तेज़ी से डेवलप करूँगा, और बहुत ही इसका जो जितनी जनता है, इसकी जो लोग हैं, उनकी जो लेवल ऑफ इकोनॉमी है, जो उनका पर कैपिटा इनकम है, उसको 2 गुना करने जा रहे हैं, ऐसा उनका प्रण है। So I would like to welcome Honorable Japanese Ambassador Uno-san, Consul General of Japan Yoshi Ishikawa-san, President of JFE Holding Kitano-san, Joint Managing Director and CEO of JSW Steel Jayant Acharya-san, distinguished guests, ladies and gentlemen. Of course, we also have the youngest Chief Secretary of Odisha, the only lady who has ever become, in 90 years history of Odisha, Chief Secretary of India, Anu Garg-ji. Odisha has, over the years, built a strong reputation as one of India's most industry-friendly states. Under the current leadership, this reputation has only grown stronger. When you come here with a vision, you find a government and administration that stand firmly behind you, enabling execution with clarity and speed. At JSW, we are making significant investments across Odisha, from ports to cement to multiple steel plants, which reflect our deep confidence in the state's industrial ecosystem and its immense potential. This is a mineral-rich state, as I mentioned, forward-looking state that is truly ready for large-scale growth. In steel itself, we are proposing on 4 sites simultaneously. Never ever this has happened anywhere in the world, that any one group is building 4 steel plants at the same time in the same state. A greenfield plant of immense magnitude in Paradeep, another greenfield project in Dhenkanal, a third greenfield site in Keonjhar, and the expansion of our capacity at Sambalpur. Based on our experience, I can say with full conviction that the speed of execution and delivery by the Odisha government is truly unparalleled. We have Hemant Sharma ji, who is really the driver of industrial development in the state. He is the Hanuman of Chief Minister Manझी ji. तो जैसे मांझी जी बोलते हैं, ये उनको बिल्कुल उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं. तो आई कॉल हिम हनुमान ऑफ उड़ीसा, हनुमान ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. I can say with full conviction that the speed of execution and delivery by Odisha government is truly unparalleled. Take Keonjhar for example. Keonjhar is a district in Odisha where mostly tribal are there. So it's not easy to get land in that kind of district. But, for example, we have got 7 Gram Sabhas already cleared. Gram Sabha means that they have to approve that, okay, this project can come. Normally, there will be always some resistance, some problem, but they have approved. And 5 more will happen in lightning speed. I would like to sincerely thank Honorable Mohan Charan Manझी ji, Honorable Dharmendra Pradhan ji, and the entire government of Odisha for creating such a phenomenal enabling ecosystem for industry. Today is a milestone. But before I speak about
where we are currently, I want to speak about where this began. In November 2009, I sat across a table in Japan with Mr. Bada-san of JFE, who was the then CEO of JFE. India was growing fast. We needed exceptional steel. We needed high quality steel. And I did not have time to waste. So I wanted it to happen yesterday. That was the whole idea. So the kind that goes into making cars, making tanks, making power transformers, motors, JFE had mastered all that special steel science. And Bada-san had the vision to see what a partnership with JSW could become. That first handshake, 6,000 kilometers from here, is where everything you see today was seeded. JFE took a stake in JSW Steel in 2010. Trust became equity. And then came the real test. When the Supreme Court banned iron ore mining in Karnataka, our Vijayanagar plant was at the edge of a shutdown. JFE rerouted ore shipments already bound for Japan and sent them to us instead. Nothing in our agreement asked of that. They did it anyways. Through the global steel crisis of 2015, through COVID, every time this partnership was tested, JFE showed up. And with every challenge we solved together, the relationship deepened. From licensing to equity to our first 50-50 joint venture for electrical steel in 2023 to what we are inaugurating today. Like we say in Hindi, एक और एक 11. हम लोग बोलते हैं एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 होता है normally, लेकिन हम बोलते हैं एक और एक 11. 1 and 1, 11. Has always believed in what I call, in Japanese, what I call ichi ichi, jui ichi. So it's the same thing. That's how it is translated in Japan. In Japanese, 1 and 1 is 11 and not 2. So 2 cultures, 1 belief. Because when 2 strong organizations with the right values and right trust work as one, they don't just add up, they multiply. 15 years of JSW and JFE is the proof of that philosophy. And what we are building here in Odisha is where the multiplier reaches its full power. We acquired Bhushan Power and Steel in 2021, a SIC unit of 2.75 million ton per annum. We turned it around with quick time into 4.5 million ton steel plant, employing 25,000 people. Some of you are already sitting here. But we always knew this plant was built for more. This plant has potential to be one of the best steel plants in the world. With JFE as our equal partner, we now commit to expand this to 10 million ton per annum in the first stage, and then go to 15 million ton stage in the second stage. This is the master plan of this complex, making Odisha not just India's iron ore heartland, but its steel making capital. And I want to note this is JFE's first integrated steel plant outside Japan. And they have called, so JFE has many steel plants in Japan. So they have their Fukuyama works, their Kurashiki works, Chiba works. So, but they are going to call this plant as their third works. So 2 in Japan, and this will be their third works. That is what they are going to say. That is the importance that they are giving to this plant. We will also be adding downstream facilities here that will create additional opportunities for medium and small industries. We will create an industrial park here, as Dharmendra Pradhan ji also wants. We are going to create that industrial park so that a lot of MSMEs will come. And with MSME comes huge amount of employment. A lot of people will get employed because छोटे-छोटे plant होते हैं, उनको बहुत लोग चाहिए, छोटा-छोटा काम होता है. तो MSME यहाँ पर एक मैं बात कर रहा था धर्मेंद्र प्रधान जी, हेमंत शर्मा जी, सीएम साहब से भी कि हमको ये यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल पार्क का प्लान करना चाहिए. उन्होंने ऑलरेडी ज़मीन भी आइडेंटिफाई करी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, प्लग एंड प्ले होना चाहिए कि आप आओ और आपको पावर मिल गई, पानी मिल गया,
and you start your activity. तो पूरा देश के लोग यहीं आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है. Kitano-san, the seeds that Bada-san planted in 2009 have grown through your leadership into something remarkable. You have been with us in good years and the difficult ones. I am proud to stand beside you today as equal partners in this next chapter. We have called this event as Forging Ahead. And Forging Ahead is the name we have given this moment. It is also a description of what JSW and JFE have always done together. Ichi Ichi, Ju Ichi. Our best steel, I believe, is yet to come. Jai Odisha, Jai Hind, Jai Odisha. Thank you so much, sir, for this inspiring, enriching speech. Our partnership today stands as a strong proof to global collaboration and shared technological excellence. We have with us President and CEO JFE Holdings, who has positioned India as a key growth market and has promoted this project as a core initiative within the group's global growth strategy. On this important milestone occasion, I would be humbly requesting President and CEO JFE Holdings, please put your hands together. Let's welcome Mr. Yoshihisa Kitano for his address, and I would be requesting Mr. Fujisawa as the interpreter to kindly join us. Namaste. JSW और JFE के सभी साथियों को दिल से धन्यवाद.本日ここにオディシャ州首相閣下並びに駐インド日本国全権大使閣下はじめ多数のご来賓の皆様にご臨席賜り、JSW JFE スティールのこのような発足式という極めて意義高い式を開催できますことを JFE を代表して心より御礼申し上げます。Your Excellency Shri Mohan Charan Maji, the Honorable Chief Minister of Odisha, Your Excellency Shri Dhamdra Pradhan, the Honorable Minister of Education, Your Excellency Ambassador Ono, the Ambassador of Japan to India, distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of JFE, I wish to express my profound gratitude for your gracious presence at today's inauguration, marking the establishment of JSW JFE Steel. It is a privilege to celebrate this milestone in the presence of so many esteemed dignitaries. また JSW 並びに JFE、そして JSW JFE スティールの関係者の皆様に心より感謝申し上げます。I would also like to convey my sincere appreciation to all the members of JSW, JFE, and JSW JFE Steel, whose dedicated efforts have made this day possible. 本プロジェクトは JFE の世界最高水準の製鉄技術と JSW の高い競争力を有する製造基盤を融合させることで、インド全体の経済発展と社会基盤の強化に貢献することを目的としています。これは単なる設備投資や技術導入ではなく、持続可能な成長を見据えた長期的な挑戦だと考えております。JSW JFE Steel seeks to contribute to India's economic development and strengthening of its social infrastructure by bringing together JFE's world-leading technologies and JSW's highly competitive production capabilities. We regard this initiative not merely as an investment in facilities or technology, but as a long-term undertaking aimed at sustainable growth. JSW と JFE が
提携協業関係を築いて以来、今年で15周年という大きな節目を迎えました。2009年にスタートしたこのパートナーシップは、鉄鋼業界を取り巻く環境が大きく変化する中におきましても、互いの強みを尊重し合いながら、技術、品質、そして安定供給の向上に向けて、共に歩んできた極めて意義深い取り組みであったと実感しております。This year marks the 15th anniversary of the partnership between JSW and JFE. Since its inception in 2009, our collaboration has continued to deepen, even as the global steel industry has undergone profound changes. Throughout these years, our two companies have advanced together, respecting each other's strength and working to enhance technology, quality, and stable supply. This partnership has been of great significance in the development and success of both sides. そして本日このプロジェクトを通じて、両者の関係性がさらに進化し、新たなステージへ進んだことを強く感じております。この15年で培ってきた信頼と経験は、今後の協業をさらに加速させる大きな基盤となることでしょう。Today, as we launch JSW JFE Steel, I strongly feel that our relationship has entered an even more advanced stage. The trust and experience cultivated over the past 15 years will undoubtedly serve as a solid foundation of new opportunities to collaborate in the years ahead. この15周年という節目を新たな出発点として、これからも JSW と JFE スティールは切磋琢磨しながら鉄鋼業界の未来を切り開くパートナーとして、より高い付加価値を社会に提供し、共に成長していくことを目指してまいります。改めて本プロジェクトに関わったすべての皆様に感謝申し上げるとともに、JSW JFE スティールのさらなる発展を心より記念し、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。As we commemorate this latest milestone, JSW and the JFE renew their commitment to continue working closely together as partners shaping the future of the steel industry, striving to deliver greater value to society and grow together and become stronger together. In closing, I wish to express my sincere gratitude once again to all who have contributed to this project. I extend my best wishes for the continued success and the prosperity of JSW JFE Steel. Thank you very much for your attention. Last message. I love Sambalpur. I love JSW, and I love also Odisha and India. Thank you very much. Thank you so much, Kitano-san, Mr. Fujisawa. We are truly privileged to welcome Head of the Administration of Government of Odisha, who is the first woman Chief Secretary, ladies and gentlemen, who stands as a powerful symbol of dedication and quiet strength. Let me draw your attention. You will be glad to know that she is not new to this region. She has already served as the sub-collector of Jharsuguda and also as the collector of Sambalpur and Bargarh. Huge round of applause. Let's welcome Madam Anu Garg for her address. Thank you. Should I just? Yeah, thank you. Honorable Chief Minister of Odisha, Honorable Union Minister, His Excellency, the Ambassador of Japan, Honorable Minister Revenue, Honorable Minister Panchayati Raj, Honorable MLAs, Mr. Sajjan Jindal, Mr. Kitano from JFE,
Mr. Parth Jindal, and all from Team JFE, Team JSW, from Government of Japan, ladies and gentlemen. As she mentioned, when I started my journey 35 years back, when I joined the Indian Administrative Service, my first posting was in Jharsuguda. At that time, Jharsuguda was nothing like the Jharsuguda now. And thereafter, I was the collector of Sambalpur. And so both these places I hold with great affection in my heart, and it's always a pleasure to be back. Today, I would first of all like to congratulate JSW and JFE for entering into this partnership. For us, this is not just an agreement. For us, it is a strategic milestone in Odisha's industrial journey, a strong signal that the state is steadily moving up the value chain in metals and manufacturing. It is not just a single project. For us, it brings together Odisha's resource strength, India's industrial push, and Japan's globally respected technological capability, and reinforces Odisha's emergence as a destination for advanced value-added manufacturing. We in Odisha like to believe that we have the edge. We call it EDGE for EDGE. The E stands for economy. You will be happy to know that Odisha has been consistently rated as #1 in the country for its fiscal prudence. And that too by the Indian policy think tank NITI, and we are head and shoulders above the others. And that is for fiscal management, for keeping within fiscal deficit, and also for resource mobilization. Apart from that, the D in the EDGE is for demography. We have almost 64% of our population in the 15 to 64 age group. And as Mr. Jindal mentioned in his speech, large number of technical personnel, large number of technical institutes, and there is one IIM based in Sambalpur itself. G stands for geography, and as you know, we are home to 25% of India's coal, 40% of iron ore, 98% chromite, and apart from that, 575 kilometers of shoreline, lending itself to port-led growth. And of course, we are the gateway to Southeast Asia. The E, final E in EDGE, is for the ecosystem. The ecosystem that we have carefully curated, including all our policies by which we are able to get more and more people like you. And also, in this ecosystem, I would like to include the recently articulated vision, the vision document, which was led by our Chief Minister and which was made with the partnership of all the people of Odisha. In this vision, we have targeted that the $113 billion economy that Odisha is presently, we will move to $500 billion by 2036, which is when Odisha turns 100, and by 2047, $1.5 trillion economy. To do that, while we are growing at 7.9%, which is better than many other states, we still have to go a long, long way. We have put for ourselves a very ambitious target of creating 1 crore non-farm jobs by 2047. And hence, all such interventions and the promise they bring for MSME growth in the state
is very, very critical for all of us. I would also like to mention here that we are very grateful to JFE for having come to our state. We already have a footprint which is growing from Japanese companies, including TYK, Krosaki, Nippon Steel, Indonesin, Toray, Yokohama, who are already with us in the state. We do not see Japan as an investor only, but as a strategic partner in Odisha's phase of growth, next phase of growth. Because Japan brings a culture of quality, discipline, process excellence, long-term commitment, and we value this as it aligns with the vision that we have set for our state. To JSW, I would like to say that they're already partnering with us in not just steel, but renewable energy, electric mobility, batteries, and we look forward to furthering this partnership. To JFE, we would like to assure all the support that is required. We are all here to say that we care and we are there for you at all times. Thank you. Thank you so much, ma'am. Ladies and gentlemen, dignitaries on the dais of the dais, India and Japan share a long-standing relationship founded on mutual respect, innovation, and economic cooperation. We have with us a seasoned diplomat and a key architect of the modern India-Japan strategic partnership. As ambassador of Japan to India, he has been actively strengthening cooperation across infrastructure, technology, industrial investment, and cultural exchanges. From facilitating high-level bilateral engagements to enabling Japanese industry participation in India's growth story, his leadership continues to deepen the bonds between two nations. To share his valuable perspective on this important collaboration, I would be humbly requesting His Excellency Kiichi Ono, Ambassador of Japan to India, to address the gathering. Shri Mohan Charamaji, Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Dharmendra Pradhan, Honorable Minister of Education, Government of India, Mr. Yoshihisa Kitano, President and CEO of JFE Holdings, Mr. Sajjan Jindal, Chairman and Managing Director of JSW Group, Mr. Jayant Acharya, Joint Managing Director and CEO of JSW Steel Ltd. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Namaskara, good morning, Jai Jagannath. Mona Keichono, Mu Japan du Sala Lastoradot, Mu Prathama Sarpai Odisha Gastachi Ashbar Bahoto Kushiachi. I would like to extend my sincere congratulations to JFE Steel and JSW Steel on the launch ceremony for their new joint venture integrated steel mill in India. Japan and India share a common vision of a free and open Indo-Pacific and have built a close cooperative relationship over many years. With Honorable Prime Minister Modi's visit to Japan last year, the special strategic global partnership has entered a new golden chapter and is evolving into a truly strategic partnership. Economic relations between Japan and India have also entered a new stage. For example, the Japan-India joint vision for the next decade, two ministers agreed on last year, sets a new target of 10 trillion yen, about 68 billion US dollars in private sector investment from Japan to India. It doubles
the previous achieved goal. Furthermore, regarding human resource development, the two leaders agreed to aim for the exchange of more than 500,000 people over 5 years, including 50,000 skilled and potential talents from India to Japan. Going forward, the public and private sectors will continue to work together as one to ensure the achievement of these goals. Distinguished guests, the state of Odisha is rich in mineral resources such as iron ore. Their exports to Japan have supported the economic development of both countries. During the post-Second World War reconstruction period in 1950s, while other nations banned iron ore exports, India lifted its ban, and the iron ore shipped from Odisha contributed to Japan's economic development. The people of Japan still remember and are grateful for the principled and generous stance Indian government demonstrated. There was a traditional Japanese tea house in the Japanese ambassador's residence in Delhi that was built in 1950s with donations from several major Japanese steel manufacturers, including the predecessors of JFE, to commemorate the lifting of the ban on iron ore exports from India to Japan. Unfortunately, due to its age, high temperature, and the humidity, the tea house had to be demolished. Nevertheless, I still take every opportunity to tell this story to visitors to my residence as a symbol of our friendship that grew out of iron core. I also had an opportunity of telling this story to Honorable President Murmu when I presented the credentials to Madam President 2 years ago. Today, the form of Japan-India cooperation has evolved further, and Japanese steel manufacturers led by JFE are actively increasing their investments in India. Japan is committed to cooperate with India to achieve its target to make a crude steel production capacity of 500 million tons by 2047 through innovations in steelmaking technology. Ladies and gentlemen, as previous speakers mentioned, I understand that the collaboration between JFE Steel and JSW Steel has steadily deepened over more than 15 years. As an initial step, technical support in the blast furnace and steelmaking operations began in 2010, starting with the provision of technology in high value-added sectors such as automotive steel sheets and electrical steel sheets. The collaboration has significantly evolved into this joint venture here in Sambalpur. I'm convinced that these 15 years symbolize industrial cooperation between Japan and India, contribute to Make in India, and will play a major role in the future advancement and sustainable growth of India's steel industry. Next year, the year 2027, marks the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Japan and India. To further strengthen bilateral relations between the two countries, we began planning how to celebrate it in both countries. I'd like to organize many milestone events to commemorate this special year, 2027, together with the Indian central government, state governments, and business communities, not only in Delhi, but also in many parts of India, including Odisha. Today, JSW and JFE had a common slogan, common name of forging ahead and getting stronger together. This is very impressive, excellent common target. But this is not just between JSW and JFE. It should be between Japan and India, and also Japan and Odisha.
So to Mr. Jindal, 1111 is not just for your two companies. That must be for our two countries. So let's forge ahead and get stronger together. Thank you very much, Daniel. Thank you, Your Excellency, for your continued support and encouragement of Indo-Japanese partnerships. Ladies and gentlemen, we now arrive at the most anticipated moment of today's ceremony, the official unveiling of the new company name, the flag, and a lot of things. So I would be humbly requesting first and foremost our Honorable Chief Minister, sir, to kindly do the honors by unveiling the flag digitally by pressing the remote of the button, followed by a video. I request everyone to kindly join us. We have a video on the same. Can I expect a huge round of applause from all of you? So with that, ladies and gentlemen, I would like to present the new logo. Can we play? This relationship is a real historical relationship. Not many relationships last like JFE and JSW has happened. 2009年 JSW Steel The background to the establishment of the Strategic Comprehensive Alliance with JSW Steel in 2009 was a clear objective 成長するインド市場において両社が to enhance competitiveness in the rapidly growing Indian market by leveraging the respective strengths of both companies. 明確な目的がありました。 A very important thing is that any long-term relationship, it has to be a win-win situation for both the partners. Our cultural values, our ethos, our thinking with JFE, I think, found a very good match. In JSW, they found a growth-oriented partner. In JFE, JSW found a partner which had all the technology, all the patience to hold hands of JSW and take JSW, forward. In this way, the collaboration between JFE and JSW has been shaped through a combination of strategic decision-making, persistent on-site technical support, and organizational reform. I gave this slogan that 1 + 1 is equal to 11. In Japanese, it is echi echi doichi. And I think that is what actually brings out the amplified strength of JSW and JFE together. Japanese, in any industry, they have a very special way of running businesses. They do it very slowly, in a very systematic, very incremental way, right? And we wanted to grow fast. So we felt that if we have someone who had the technology, who had the processes which are well documented, well defined, which can help us to learn our system fast, then that would be the best thing. Usually the Japanese companies think for 50 years, or at least on a very long term.
whereas in India we are more for the medium term. We wanted a partner for the longer run. We didn't want a short-term partner in our journey. Our vision was to see that we become one of the leading steel producers in the world, and we wanted to bring in the best which leading steel producers have globally. 15 years ago, JFE Steel possessed world-class technologies in the production of high-grade steel as well as advanced environmental and energy-saving technologies. In particular, it had strong capabilities in the development and manufacture of high value-added products for the automotive steel sector. Meeting with Bada-san in his office and talking about JSW's growth plans and what we want to learn from, how we can learn from JFE and how we can build together a very good business. It took us 10 years from the first discussion to the actualization of the joint venture, but it happened. The concept of this collaboration dates back to 2009. At that time, as competition in the global steel industry was intensifying, JFE recognized the strong growth potential of the Indian market and explored a strategic alliance with JSW, a leading local company. Through this alliance, the two companies aim to enhance their competitiveness in the Indian market and strengthen their presence within the global steel industry. When we did the joint venture in 2010, the first step was to set up a very high quality cold rolling complex which would supply to the automobile industry. So that was our first venture that we did together, and after that we never looked back. Over the past 15 years, I have been directly and indirectly involved in many projects with JSW. Today, we are working as one to make this integrated steelmaking project a steelworks of which India and the world can be proud. I watch over this project as if it were my own child, and I have absolute confidence in its future growth. If you see the Japanese way of working, they bring in discipline, they bring in punctuality, they bring in systems and processes in whatever they do. The Indian strengths are flexibility, innovation, and maybe responsiveness. Solution-based approach. If we see a problem, we get down to solving the problem, and we have, if we look at the element of jugaad, we find ways and means to find a solution to any problem. And the combination of these two has led to a cultural integration which has found a unique way of working at JSW. 15 years in a life is a long period. So now we have taken one more step where we are making a company which is a 50-50 joint venture. JFE has confidence in JSW and therefore they've formed partnership 50-50 with us to make CRGO. Similarly, BPSL, the Bhushan plant in Odisha, in Sambalpur steel plant. So that also we have now brought it under a 50-50 JV. This production integrated steel facility will have the capability to scale up from a 4.5 million ton existing today to 10 million tons and beyond over time. Our collaboration with JSW is an extremely strategic partnership for our company. Over the years, through initiatives such as the joint venture in grain-oriented electrical steel, CRGO, and technical cooperation in the production of high-grade steel sheets, the two companies have built a strong relationship of trust while contributing to the development of the Indian market. As they say, marriages are made in heaven. So I'm sure this marriage of JSW and JFE has been defined in the heaven and actuated on earth.
So it is a very strong relationship, and I'm sure it will last all of us in the relationship. Close to 20 years of partnership is a milestone worth celebrating, ladies and gentlemen. What a truly inspiring glimpse into a partnership built on trust, collaboration, and shared vision. A powerful reminder of how far this partnership has come and the exciting path that lies ahead. So we have unveiled the digital plaque, we have unveiled the logo, and you have seen our beautiful video. In both Indian and Japanese traditions, the resonating sound of a gong symbolizes auspicious beginnings, positivity, and the start of a meaningful new journey. May I now request Mr. Sajjan Jindal and Kitano-san to kindly come forward and strike the gong to mark the formal beginning of this remarkable joint venture. And I request everyone to kindly join us. Give your heartfelt wishes. That's a very, very prestigious beginning. This side, sir. And get ready to give full energy because we are going to witness history in the making. Let's start. Thank you. Beginning of a new era indeed. Congratulations to the entire JSW and JFE teams on this proud milestone. Thank you, Government of Odisha. Thank you all our dignitaries for your kind presence. Ladies and gentlemen, one of the most important part of this entire event. While we take a very important step towards Viksit Bharat, Samriddh Odisha, we are fortunate enough to have with us a senior statesman and one of India's most dynamic policymakers, currently serving as the Honorable Minister of Education, Government of India, who has played a pivotal role in shaping national policies across energy, skill development, and education. He has also been instrumental in strengthening India's engagement with global industries, actively inviting international collaborations to support India's growth and manufacturing ecosystem. It is my honor to invite Honorable Minister of Education, Government of India, Shri Dharmendra Pradhan ji, to kindly address this August gathering. Please give a huge round of applause, everyone. Jai Ma Samleshwari, Jai Jagannath. Honorable Chief Minister of Odisha, Sri Mohan Majhi ji, Honorable Excellency Japan, Ambassador of Japan, Excellency Kicho Ono, Honorable Revenue Minister of our state, Sri Suresh Pujari ji, Honorable Rural Development and Panchayat Raj Minister of Odisha, Sri Ravindranath Nayak ji, Honorable MLA Sambalpur, Sri Jayanarayana Mishra ji, Honorable MLA Jharsuguda, Sri Tankadhar Tripathi ji, Honorable Sri Sajjan Jindal ji, CEO of JFE, Sri Ketan Sana ji, Aga Ki Sana ji, Agwa Sana ji, Madam Anu Garg, Chief Secretary of Odisha, Sri Hemanta Sharma, SES Odisha, my dear friends from both the group, both the companies, from both the countries, dignitaries from locality, friends from media. Today is an auspicious day for our country and also Japan, our colleague, long-time colleague Japan. Just now,
our Japanese ambassador in India, my good friend, Mr. Ono was, Excellency Ono was mentioning, since 1952, India and Japan have started their diplomatic relationship. By 2027, we will be completing 75th years of our diplomatic relationship. This is a waste occasion to prepare the celebration. I am told this is the substantive investment by a steel major of the globe, JFE. JFE is not a mere steel making company. It's a quality steel making company. They are coming out of Japan for the first time with our reliable, the #1 steel producer of our country, JSW. Congratulations to both of them. This bondage, I told before this meeting to both of them, this is a marriage between two families. This is a marriage between India and Japan. This is marriage between JSW and JFE. This is a marriage between Japanese civilization and Indian civilization. And this place has a great link with Japanese civilization. How? Japanese practice is Buddhism. Buddhism started from this subcontinent, this part of globe. There are three ways of belief in Buddhism: Hinayana, Mahayana, Vajrayana. Vajrayana is the latest one in the Buddhist thought process. Guru Padma Sambhava is the pioneer of Vajrayana theory in Buddhism. Let me, with a pride, inform this august gathering to my Japanese colleague, the great Guru Padma Sambhava belonged to this part of globe. We are just on the bank of Hirakud Reservoir. Years back, centuries back, the great philosopher of the human civilization, Guru Padma Sambhava, took birth in this part of this, in the Summers area of Hirakud Dam. And I am confident this is a story of 6th century. After 1500 years after, when we are in the mid of the beginning of the 21st century, when we are going to complete our 75 years of relationship with Japan, I am confident this partnership, this marriage, this engagement, what is the size of this engagement? Size of this engagement is around 1 lakh crore. Hemantaji was telling me, sir, this investment is around 30,000 crore. Hemantaji, you are a good officer. But my dear friend, Sajjan is a perfect businessman. He knows how to create wealth. And I am proud. My Prime Minister Narendra Modi is the first Prime Minister of his country. He said, I salute the wealth creator of this country. Unless until we create wealth, development, welfare, all these things cannot be happen. All we can do that. I am told, we all have remembered, I was telling them, I was I was party to this development when this area was a forest area, it is a rural area. In the early part, the beginning of the 21st century, how this area converted to an industrial cluster, starting from Sundargarh to Bargarh, from agrarian to forestry to modern mineral industry, tourism, forestry, that beyond education. This area is full of all this quality now. I have seen the development of last 25 years. Now we have an airport. Now 5-star hotels are also coming. New civil life are now coming up in this area. I was talking to our ambassador friend with cooperation of CII. Recently we have started a skill development center in Sambalpur, where now 25 students are learning Japanese language. Now, I will announce a future scheme. Now 25 students of our locality, our Sambalpuria boys, we are getting trained in Japanese language. Very soon they will be placed somewhere in the Japan.
Mr. CEO, this offer to you. Now, you buy one, get one free. Now you will be your own Japanese experts, local boys with Japanese language, with their skill, their vision, their hard work. I'm confident our economy is going to benefit. Japan and India are natural friends. And we Indians, so we always, in our rural area, in our households, we have a belief, this is Japan quality, made in Japan. We have, since our childhood, we have fascination. Everything quality, it is Japan. Personally, it is a very pleasure moment for me. Some time back, I was in charge of Steel Ministry of this country. I visited Japan in 2019, just before Corona. I've talked to some representative of JFE. I have a detailed discussion with the other company, which Nippon. I have a detailed discussion with Nippon. I'm happy both of them are coming again to India nowadays. I'm happy. I'm congratulating JSW Group and Sajjan ji and Parthaji. They are also rekindled the hope of POSCO in our country. Now I'm happy they are coming to Dhenkanal district with a quality steel plant. Friends, JSW is the #1 steel maker in our country. They have around 35 million metric ton. Tata is behind them, SAIL is behind them. And with this addition, 35 and 24 of JFE, this is a real-time multinational company are coming up in our own Sambalpur, own Jharsuguda, own Thelkuli. This is a pleasant moment for all of us. Let us celebrate, let us welcome. Congratulations to JSW and JFE with a new logo. The bad history of Bhushan's has gone. Our bad memories has gone. With your presence, this area, this ecosystem will get a new life. Thank you. मित्रों, मैं सज्जन जी आपको थोड़ा याद दिलाता हूँ. आपने कहा, मैं अगर ठीक समझा, आपकी MOU JFE के साथ नवंबर में हुई इस प्लांट के लिए. मैं आपको याद दिलाता हूँ, आप आए थे दशहरा के दिन संबलपुर प्लांट को. मेरे को खबर मिला कि हमारे सज्जन जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, ऐसे बड़े भाई तो हैं, और भाभी जी दोनों आए थे. मैंने कहा कि सज्जन जी अच्छे दशहरा के दिन था, दशहरा के दिन पे आप आए हो, माँ समलेश्वरी का आशीर्वाद करके जाओ, अच्छा होगा. वो होगा उसकी पहले थोड़ा, आपकी जब MOU होगी उसकी थोड़े ही दिन पहले आप माँ समलेश्वरी का आशीर्वाद लिए. जय माँ समलेश्वरी. JFE आ गया. आपकी विजयनगर में JFE के साथ थोड़ा थोड़ा दोस्ती था, पार्टनरशिप नहीं था, एंगेजमेंट था. चोरी छुपी डेटिंग होता ना आज के दिनों में, ये डेटिंग चल रहा था. अभी तो रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गया, मैरिज ही हो गया. लेकिन हमको दहेज चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा. मेरे को 2 चीज चाहिए सज्जन भाई. You have promised me, Bhabhi ji also promised, in the premises of Ma Samleswari, we want to create this Sambalpur, Jharsuguda, Bargarh, Sundargarh economic zone are the globe's hottest manufacturing cluster in this very area. We have a fit case. We have a fit case. This industry सब बड़े लोग आए हैं, अच्छा है, हम उनको स्वागत करते हैं, मदद भी करते हैं. लेकिन आपको 2 अपेक्षा मेरे को क्या मिला? बड़े लोगों के घर में शादी हुआ, मैं बाहर से लाइट देख के ताली लगाऊं, इतना तो नहीं चलेगा. ये डेमोक्रेसी है, मेरे को भी कुछ मिलना चाहिए. मेरे लोकल आप बनाइए फैक्ट्री. मैं कहता हूं, आई एम विथ यू. You are a major steel maker in our state also. You come in a big way. You have 4 plants in your plant, and your son has putting major cement plants in our state. Congratulations. My entire honorable Chief Minister is here. His entire colleagues, administrative colleagues are here to give you red carpet. Welcome. But 2 things. 2टा जिनसे करीबा पाई पड़ीबो. आपको यहाँ मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनानी पड़ेगी. हम आपको यहाँ रेवेन्यू मिनिस्टर साहब बैठे हैं, खुद चीफ मिनिस्टर हैं. हम एक अभी संबलपुर रिंग रोड बना रहे हैं, एक झारसुगुड़ा बाईपास बन रहा है. झारसुगुड़ा से संबलपुर LNT रोड की पैरेलल NHI और एक रोड बना रहे हैं.
हम कनेक्टिविटी के एक बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं। यहीं से आपको रांची जाना पास होगा, यहीं से आपको भुवनेश्वर जाना पास होगा, यहीं से आपको विशाखापट्टनम जाना पास होगा, यहीं से आपको रायपुर, बॉम्बे जाना पास होगा, यहीं से आपको दिल्ली जाना पास होगा। ये एक लॉजिस्टिक सेंट्रल पॉइंट है। आप यहीं जिस प्रकार की स्टील हम बना रहे हो, आप इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर ग्रेड की स्टील बना रहे हो, डिफेंस इक्विपमेंट के लिए स्टील बना रहे हो, ऑटोमेटिव्स के लिए स्टील बना रहे हो, और कॉन्स्टिट्यूएंट इसी जोन में लगभग मेरे को हेमंत जी बता रहे थे 4.5 लाख मेट्रिक टन की एनुअल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन भी है। वेदांता है, आदित्य बिरला है, ये तीनों को मिलाकर और भी बहुत अच्छे रुंगटा वगैरह इंडस्ट्रीज लोकेलिटी में है। महानदी कोल कंपनी देश की सबसे बड़ा कोल प्रोडक्शन कंपनी यही है। एनटीपीसी की मेजर प्रोडक्शन जनरेशन सेंटर रही है। ये सब को मिला के उड़ीसा सरकार और भारत सरकार दोनों मिलके अभी अभी वैभव स्कीम अनाउंस हुआ 33,000 करोड़ रुपया की प्लग एंड प्ले की इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने के लिए भारत सरकार योजना बना रही है। मैंने राज्य के मुख्यमंत्री जी को अनुरोध किया है, वो काम आगे उसमें आगे बढ़ा रहे हैं। इस जोन में हम 2-3 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए, ऑटोमोबाइल्स बने, डिफेंस प्रोडक्शन बने, छोटे छोटे यहाँ की जो नौजवान, और यहाँ जैसे आपने याद दिला 7 यूनिवर्सिटी है, बुर्ला इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, IIM है, संबलपुर यूनिवर्सिटी है, जनरल गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है। टैलेंट पूल की कोई कमी नहीं है। इन दिनों में यहाँ IBM भी आ रहा है, जोहो आप पहुंचा है, और बड़े बड़े कंपनियों को हम यहाँ लेके आएंगे। लेकिन आपको हमको एंकर चाहिए। आई एम हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए आपको मेरा अनुरोध है, राज्य सरकार भारत सरकार दोनों, विशेष करके राज्य सरकार, मुख्यमंत्री का उपस्थिति अपने आप में इस इलाके के लिए एक रीअश्योरेंस है। खुद रेवेन्यू मिनिस्टर इसी जिले से हैं। दोनों इंडस्ट्री की सबसे बड़ा रॉ मटेरियल आज के दिन में लैंड है। यहाँ की प्रशासन राज्य सरकार आपको रेड कारपेट देगी। आप इंडस्ट्री को यहाँ नीचे लोकल पार्टनरशिप तक, छोटे वेंडर, छोटे मैन्युफैक्चरर तक आप ले जाइए। उसमें दोनों कंपनियों की, दोनों स्टेक होल्डर की फायदा होगा। आओ गोटिए शेष अनुरोध। सज्जन जी, आपकी फैक्ट्री की जो अंदर की माहौल है, थोड़ा फैक्ट्री की बाहर भी करना पड़ेगा। ये कम्युनिटी आपकी है, लोकल गांव वाले आपकी हैं। ग्रीनरी के साथ आपको थोड़ा और काम करना पड़ेगा। मैं जिंदल वालों को पब्लिकली, इनकी पूरा परिवार की फैक्ट्री को मैं देखा हूं। ये प्लांट सुंदर और क्लीन बनाते हैं, बाहर इतना नहीं बनाते हैं। थोड़ा बाहर को भी ध्यान दीजिए। अनिल सिंह को आज कह के जाइएगा आप। अनिल सिंह हमको इसे घुमा देता है। संबलपुर को सुंदर बनाना पड़ेगा, झारसुगुड़ा को सुंदर बनाना पड़ेगा। इसी में आपकी जो इंटरनेशनल क्लाइंटेल आएगा, अच्छे शहर में आएगा तो अच्छा बिजनेस होगा। स्वस्थ रहेंगे तो लंबा चलेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा बिजनेस होगा। ये कोई खैरात नहीं है। हम ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी की बात कहते हैं। आज अभी अभी आपको उड़ीसा के अधिकारी बता रहे थे, उड़ीसा सरकार ग्रीन एनर्जी में देश की लीडिंग प्लेयर होने वाला है। आप ग्रीन एनर्जी की यहाँ टाइप करिए। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी वैल्यू चेन की संबलपुर को हमको पॉइंट बनानी है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल एम्प्लॉयमेंट और एनवायरमेंट, इसी शब्द के साथ मैं आप सबको फिर एक बार आभार प्रकट करता हूं। विशेष करके उड़ीसा के मुख्यमंत्री को शुभेच्छा देता हूं। आपके नेतृत्व में उड़ीसा की अर्थनीतिक प्रगति और हो, ऐसे सारे उद्योगपति उड़ीसा आए, अच्छे क्वालिटी बिजनेस करे। सभी को शुभेच्छा, हमारी राज्य की विकास हो। जय मां समलेश्वरी, जय जगन्नाथ। Thank you so much, sir. Thank you for this inspiring speech indeed. Ladies and gentlemen, may I request everyone to stand as we unveil the coffee table book that talks about the partnership. I would like to request our Honorable CM, Shri Mohan Charan Majhi, sir, Minister of Education, Government of India, Shri Dharmendra Pradhan ji, Chairman JSW, Shri Sajjan Jindal ji, Kitano San, Madam Anugar, to kindly unfurl the ribbon and to unveil the book.
Congratulations indeed, everyone present over here. Thank you. Thank you, dignitaries. Thank you for your kind participation. Thank you, our energetic audience we have. Today's milestone would not have been possible without the unwavering support and progressive vision of the government of Odisha, led by our Honorable CM. We are deeply honored by the presence of a leader committed to driving industrial development and economic progress in the state of Odisha, a grassroots leader with a deep connect to the people of Odisha. Our Honorable CM steering the state into a new era of industrial expansion, infrastructure development, and inclusive growth. Under his leadership, Odisha continues to emerge as a preferred global investment destination. With a clear vision of Samriddh Odisha 2036, he is shaping a future where development is rooted in identity, pride, and self-reliance. With the strength of the soil and the spirit of the people, he stands as the driving force behind a progressive, empowered, and unstoppable Odisha. Odishaର ମାଟି ଓ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସହିତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଏକ ସରଳ ଓ ସଂକଳ୍ପବାନ ନେତା। ଓଡ଼ିଶାର अस्मिता ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ଗର୍ବକୁ ଯିଏ ସଦାସର୍ବଦା ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିମୟ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉନ୍ନତି, ନିବେଶ ଏବଂ ସମାବେଶୀ ବିକାଶର ନୂତନ ଶିଖରକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି। Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the key architect of Viksit Odisha 2036, our Honorable CM of Odisha, fondly known as People CM, Shri Mohan Charan Majhi ji, for his kind address. जय जगन्नाथ, जय माँ समलेश्वरी, ऑनरेबल यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सुरेश पुजारी महोदय, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री रवि नायक महोदय, ऑनरेबल एम्बेसडर ऑफ जापान टू इंडिया हिज एक्सीलेंसी मिस्टर ओनो केइची, Honorable Consul General of Japan, Mr. Ishikawa Yoshihisa, President and CEO, JFE Steel Corporation, Mr. Yoshihisa Kitanu, Chairman JSW Group, Mr. Sajjan Jindal ji, Honorable MLA Sambalpur, Sri Janarana Mishra Mohoday, Honorable MLA Jharsuguda, Sri Tankadhar Tripathi Mohoday, Chief Secretary, Srimati Anu Garg, ex-MLA Sri Nauri Naik Mohoday, Additional Chief Secretary Sri Hamant Sharma, RDC Sambalpur Sangram Kesari Mahapatra, Collector Sambalpur Sri Siddheshwar Baliram Bandar, distinguished leadership of JFE Steel Corporation, JSW Steel Ltd, distinguished guests, ladies and gentlemen. Oha yu gogaimasu. Good morning. Namaskar. It is a privilege to hear
with all of you today at Rengali in Sambalpur for the start of JSW Steel Ltd and JFE Steel Corporation project. This project is not only just another project, it is a vote of confidence on the state government's industrial policy and the path we have taken for making Odisha to gateway of Eastern India, or as the Honorable Yashasvi Prime Minister Shri Narendra Modi ji says, Purvodaya. I warmly welcome the leadership of JFE Steel Corporation to Odisha. I congratulate JFE and JSW on the start of JSW JFE electrical steel facility in our state. This partnership between JSW and JFE is truly a partnership between India and Japan. This partnership represents India's industrial scale with Japan's excellence in technology, which together can rewrite the growth story of Odisha. बंधुगण, आज केवल संबलपुर नुहे सारा ओडिशा पाई आम समस्तंकर पाई एक ऐतिहासिक दिन, कारण दुई देश यथा भारत और जापान इस्पात उत्पादन रे निजर श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करिथिबा दुईटी आगधाड़ी ये प्रतिष्ठान संस्था एकत्र आसी रेंगाली रे एक बृहत इस्पात कारखाना आज प्रतिष्ठा करुछंती। यही जॉइंट वेंचर राज्यर इलेक्ट्रिकल स्टील उत्पादन करिवो। एथिरु इलेक्ट्रिकल मोटर और ट्रांसफॉर्मर परी अत्याधुनिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो प्रस्तुत हुए ताहाको एही सामान्य प्रस्तुत करिवे सारा भारत वर्ष पाई सारा विश्व पाई। तेणु यही उत्पाद आधुनिक पावर सिस्टम इलेक्ट्रिक वाहन पाई अत्यंत ये आगामी दिन में उपयोगी हेबा पाई ये संपूर्ण भाव में सब्यस्त हब। आपण माने जानिछंती ओडिशा वर्तमान देशर एक अग्रणी इस्पात उत्पादन करी राज्य। एबे आमे प्रतिवर्ष प्राय 40 नियुत टन स्टील उत्पादन आमे करूछु। आसंता 5 वर्ष रे आमे यहाकू 2.5 गुण अर्थात यार विस्तार करी आमे वार्षिक 100 नियुत मिलियन टन स्टील कैपेसिटी हासिल करिबो एवं ओडिशा को यथार्थ रे देशर स्टील कैपिटल आमे बनैया पे जाउछु। एठारे आरंभ होउतबा एही मिलित उद्योग ये केवल गोटे एकक ये संस्था नुहे, यह आखपाखरे अनेक आंशाल यूनिट गढ़ी उठिब जहा द्वारा एमएसएमई सेक्टर पाई अनेक सुजोग सृष्टि करिब एवं सेथिपाई मध्य जेतेबेले ये दुई कंपनी सहित एठी 15 मिलियन टन रो जेतेबेले आधुनिक स्टील प्रोडक्शन करिवार प्रस्ताव आसे एवं सेतेबेले मध्य आंसारिक इंडस्ट्री माने सेमाने मध्य प्रस्ताव देइछंती आम सरकार सहित जोगाजोग करी जे आंसारिक इंडस्ट्री आसीबारे ये पर्यंत 15टी संस्था ऑलरेडी सेमाने प्रस्ताव दे सारी एवं सेमानक मध्यरु मध्य 5टी कंपनी एथिरे काम मध्य प्रोडक्ट माने तांकर काम आरंभ कर देइछंती वर्क करिबा आरंभ करिछंती। सेतिरे रिफैक्टरी एवं कोल्टर डिस्टिलेशन इमाने तांकर काम आरंभ करी सारी छंती। वर्तमान ओडिशा रे एक प्रकार द्वितीय शिल्पर विप्लव ये चली। आज मिलित उद्योग यार जीवंत एक उदाहरण। पूर्वर मेक इन ओडिशा नाम उद्योग प्रतिष्ठा केवल प्रचार सर्वर्स की रही जाइथिला आम सरकार आसीबा पूर्वर, किंतु आम सरकार अमल एथिरे परिवर्तन आसीछि। डबल इंजिन सरकार आसीछि एवं आम सरकार केवल कथारे नुह काम विश्वास करिबा एवं प्रत्येकटी कार्य को प्रत्येकटी योजना को कार्य पहुँच करिवार आज आम सरकार गोटे पर गोटे काम करि चली। गत जानुआरी रे अर्थात 28-29 जानुआरी 2025 रे भुवनेश्वर रे
यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव को उद्घाटन करी से गोटे कथा सारा भारत वर्ष को एवं सारा विश्व को विषय जन देते जे ओडिशा में निवेश के लिए यही समय है, सही समय है। एवं से ही दिन ठारू आमे तांकर सही प्रभावी अभिभाषण एवं ओडिशा रे इंडस्ट्री को एठी आनिबा पाई एवं एठी समाने कारखाना एठी तैयारी करिबा पाई जेभଳି भाबरे तांकर संकल्प थिला एवं निजे ग्यारंटर हिसाब से काम करिबा पाई समस्त को आह्वान करले एवं इंडिया इंक को आमंत्रण परे प्राय से दिन ही से 3 दिन भितर 17 लाख कोटी टंकार निवेश पाई इंटेंट स्वाक्षरित होइतिला। सेथि मध्यरु प्राय 22 मास मध्यरे आमे लगातार भावे समानक संपर्क रखी तांकर इंफ्रास्ट्रक्चर दृष्टिकोण तांकर आनुषंगिक जहाँ भी ये प्रोजेक्ट को आगो को नवा पाई 22 मास मध्यरे 2,80,000 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्प को आमे ग्राउंडिंग विभिन्न स्थान रे करि सारिछंती एवं आसंता किछि दिन मध्यरे ये 2.5 लाख रोजगार ये सब प्रकल्प मध्य सृष्टि हेबा पाई जाउची। वर्तमान सुधा शिल्प क्षेत्र रे आमे 92,000 नियुक्ति मध्य आमे देई सारिछु। आज यहाँ साजन जिंदल जी उपस्थित है। He is associated with Odisha for the longest time. I can say that he can feel the perceived change in governance system in Odisha, especially in the field of governance. We have taken a pro-industry stand and have made life easier for establishing industrial units in the state. बंधुगण आसंता 10 वर्ष मध्य आमे सशक्त ओडिशा निर्माण करने जाऊँ एवं आमर स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठनर ओडिशा प्रदेश गठनर 100 वर्ष जिते पूरण हम आम 100 वर्ष पूर्ति पालन करने जाऊँगी। ये 2036 सुधा आम से आम अर्थनैतिक दृष्टिकोण ओडिशा को आसंता 10 वर्ष मध्य 500 बिलियन अमेरिकीय डॉलर अर्थनीति बनैबा को बहुत बड़ आम लक्ष्य रखीचु। आ को हासिल करने आम स्वतंत्र भावे विशेष भावे आम एक रोड मैप मध्य आम प्रस्तुत करिछु। ओडिशार कृषि भित्तिक अर्थनीति को जहाँकि आमर देशर आम राज्यर प्रायतः 60% रु अधिक अर्थात पाखापाखि 80% कृषि भित्तिक अर्थनीति उपरे ही आमर ये अर्थनीति पर्यवेसित अच्छी ताको मिश्रित अर्थनीति आड़ को नवा को पड़ो आउ राज्य जीडीपी अन्यून 20% रप्तानी करने को आमको पड़ो। यह संभव हम जदि ओडिशा पूर्व भारतर मैन्युफैक्चरिंग हब भावे प्रतिष्ठित हो पार। एणु निश्चित भाव में आज माननीय केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान महाशय मध्य एथिरे जो 2 कंपनी आज आम सांगरे एठी जो प्रकल्प को संप्रसारण करी आग को नेबा पई चाहूछंती से मैन्युफैक्चरिंग किभଳି भाबरे बढ़िबो आउ सेथि पई आम सरकार रो जो निष्पत्ति अछि मैन्युफैक्चरिंग हब करबा पई आम ओडिसा रे एवं जेते बेले मैन्युफैक्चरिंग हब भाबे प्रतिष्ठित आमे करई पारिबा ये 2 कंपनी सहित जो कंपनी माने आम ओडिसा को आछंती तांकर सहित निश्चित भाव में आम सरकार एक्जाक्टली यह ही आज करने जाऊँगी। ओडिशा को मैन्युफैक्चरिंग हब भाव गढ़ी तोड़ा आम राज्य पाखरे सब उपादान अच्छी जहाँ निजे ये आमर सजन जिंदल जी आम पाखरे से निजे कहूले आम राज्य रे खणी अच्छी पानी अच्छी विद्युत शक्ति अच्छी रोड नेटवर्क अच्छी बंदर अच्छी एयरपोर्ट अच्छी ता सहित मध्य एबे जलपथरे मध्य आमे एठी संजोग करबा पई केंद्र सरकार आमको बजेट रे मध्य घोषणा करिसंती। केंद्र सरकार दक्ष और प्रशिक्षित मानव संबल जो थे कि आमे वाल स्किल सेंटर आमे करिछु एवं सेमानंकर उच्च
उत्कर्ष तांकर पारदर्शिता दक्षता आज प्रतिपादन मध्य से करि पारुछंती जो थे कि एबे निकटरे ऑल इंडिया कंपटीशन रे आम पिला माने सेमाने भारत वर्ष रे जो कंपटीशन होतला 57 जन आमर पिला युवक युवती सेमाने ऑल इंडिया लेवल रे 57 जन सेमाने तांकर पारदर्शिता देखैकरी सर्वभारतीय स्तर रे सेमाने नंबर 1 हेकरी ओडिसा को सम्मानित करिकरी सेमाने मध्य आइछंती। आगामी दिन में चाइना को जीवे सेमाने प्रतियोगितार भाग नेबा पई गत वर्ष मध्य सेमाने यूरोप रो फ्रांस रो लियन शहर को जाइतिले सेठी अनेक पिला जाई प्रतियोगिता रे भाग नेइकरी मेडल मध्य नेइकरी आसीबार आउ सेति पई एहा को आखि आगे रखिकरी आमे इंडस्ट्री रेडी आम पिला मान को स्किल रो दक्षतार आगो को नेबा पई मध्य आमे वर्ल्ड स्किल सेंटर रो आहुरी मध्य आमे अधिक स्किल सेंटर करबा पई संबलपुर रे एठी गोटिए ब्रह्मपुर रे गोटिए करबा पई मध्य आम सरकार निष्पत्ति नेइचंती। आगामी दिन में आम पिला मान को इंडस्ट्री रेडी करबा पई ये चिंता मध्य करिकरी आम संपूर्ण भाव में आमे दक्ष एवं प्रशिक्षित मानव संबल प्रस्तुत करिबारे सबुठारु महत्वपूर्ण एवं यही सुविधा को सुजोग को वास्तव में रूपांतरित करबा पई सरकार द्वारा प्रदान करा जाउतबा एक अनुकूल वातावरण आमे तैयारी करिकरी इंडस्ट्री रेडी करबा पई जाउछु। ये सब सम्मिश्रण प्रभाव वर्तमान ओडिशा रे देखिबा पई मिलुछि। पूर्वरु केवल खनि एवं खनिज संपद आधारित उद्योग केवल प्रतिष्ठा होउथला आमे खाली स्टील इंटीग्रेटेड स्टील जहाँ खनि अच्छी खनि बेस इंडस्ट्री करने ये चिंताधारा आम पूर्व सरकार मानकर थिला जहाँ फल आम आग को बढ़ी पार नुँ आमर अनेक युवक युवती माने बाहर राज्य को सेमाने बाध्य होते सेठी चाकरी करने काम करने जॉब करने किंतु वर्तमान नॉलेज बेस इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल्स सेमीकंडक्टर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल्स परी क्षेत्र में यहीपरी भाव में 16टी सेक्टर रे आम सरकार आज काम करने आज संपूर्ण भाव में यही इन्वेस्टमेंट हम आम पिला माने यही संपूर्ण भाव में काम करिवार स्कोप पाइबे यही इंडस्ट्री ओडिशा रे हेबो ये प्रकार बहुत बड़ निष्पत्ति आम सरकार नहीं आज डबल इंजन सरकार माननीय मोदी जी नेतृत्व में तांकर दिग्दर्शन में आम काम करने जाउछंती। राज्य में द्रुत शिल्पायन पाई सिंगिल विंडो सिस्टम माध्यम त्वरित बेगर क्लियरेंस मान आम दे चली जिलापाल मान को शिल्प प्रतिष्ठा करने सबु प्रकार सहायता देवाई प्रत्येक प्रकल्प को सेमान को निर्देश दि जाए जे कौन से प्रकार प्रतिबंधक रहा यथा समय से प्रत्येक प्रकल्पर जो आपंकर क्लियरेंस मिलवा कथा ताकू तुरंत करने पूर्वर केवल किछि जिला किंबा किछि कॉरिडोर रे शिल्पायन होउतला किंतु आम सरकार समय समस्त जिले में 30टी जिले में शिल्प को आम सबु जिले में प्रतिष्ठा करने निष्पत्ति आम सरकार नहीं एवं से आम प्रायतः 23 रु 24टी जिले में ऑलरेडी आम शिल्पर प्रस्ताव मान आसी सारी आउ मात्र 5 रु 6टी जिले में बाकी अच्छी आम ताकू मध्य आलोचना जारी रखीचु। आगामी दिन में 30 जिले में प्रकल्प करने आम ये प्रकार प्रस्तुतिकरण करी आग को बढ़ुंट एणु आगु जेभली भाव में आपंकर बृहत शिल्प जो कथा कहते आपंकर नयागढ़ जिले में नथिला नयागढ़ जिले में एक मेगा फार्मास्यूटिकल पार्क प्रतिष्ठा करिवार आमे गोटे निकट में आम तार ग्राउंडिंग करिछु। से भाव में पश्चिम ओडिशार किछि जिला अच्छी जमती नुआपड़ा नवरंगपुर एवं देवगढ़ जिला सोनपुर बौद्ध एमती अनेक जिला अच्छी जो थे कि आमको मयूरभंज रे भी आमको जोटी शिल्प हो पारि ना ताकू प्राधान्य दौचु तापाई स्वतंत्र भाव में आम इनसेंटिव देवा सहित पॉलिसी को आहरी अधिक अट्राक्टिव करिकरी समानको आनिबा पाई मध्य आम सरकार निष्पत्ति नौछंती। Friends from JFE Steel Corporation, now Odisha is prepared to take industrialization to a greater height. All the districts of Odisha give ample opportunity to establish industrial units. For example,
my own district, Kendusar, which itself has immense industrial potential, giving ample opportunities in steel manufacturing. You can give a serious thought to it, which offers a valuable steel manufacturing at scale. You can explore some additional opportunities for investment in Odisha during your stay. The government can give a patient hearing in case you need any clarification. I see a great future in this new partnership, especially Odisha give a strategic port accessibility. In fact, one of the biggest port in country is in the east coast of India. I hope this partnership becomes an example for other industries, an example of how world-class technology, strong local partnership, and responsive governance can come together to build the future. We would be proud to build that future together with JFE Steel, JSW, and many more global industry leaders in the years ahead. Thank you once again for your trust and partnership. शेषरे संबलपुर एवं यही अंचलवासी को यही यूनिट को उत्सर्गित करुछि एवं संबलपुर अंचल औद्योगिक विकास आज एक नुआ फर्द जोड़ी है आउ से मु आपण मान समस्त को जो मैंने उपस्थित अच्छा समस्त नेतृमंडली को मो अशेष अशेष धन्यवाद दूँ। आज संपूर्ण भाव में आम सरकार माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिग्दर्शन रे आज आमे आगु को बढ़ी चली आउ से आज निश्चित भाव में जो माननीय प्रधानमंत्री पूर्वोदयर कथा कही पूर्वोदयर परिकल्पना करते से आधार जो भाव में से फोकस करिसेंती आम सरकार प्रथम 15 मास भितर 7 थर से ओडिशा को आसी एवं ओडिशा को किभली भाव में विकसित भारत पाई ग्रोथ इंजिन हिसाब से काम करिवो आउ सेति पाई प्रत्येक थर आसवा भितर से आमको गिफ्ट नहीं आसी थांती एवं अनेक गिफ्ट मध्य से आमको प्रदान करिसेंती। मु निश्चित भाव में धन्यवाद देवी केंद्र सरकार रो जो माने नेतृत्व नहीं आज आमको समृद्ध करईबारे माननीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में आज आगू को बढ़ी रेल रे आमे आज 90,000 कोटी टंकार आज रेल रो भित्तिभूमि सहित आज प्रत्येक स्टेशन रो एवं प्रत्येक क्षेत्र में आमे किभली रेल रे आगू को बढ़िबा सेति पाई प्रत्येक वर्ष बजेट रे आमे पाखापाखी 11,000 कोटी टंकार आमे बजेट रे प्रावधान रखिकरी आज ओडिशा सबुठारु ताहार भित्तिभूमि रे आगो को बढ़ी चली जातीय राजपथ निर्माण रे मध्य आज 70,000 कोटी टंकार अधिक प्रकल्प माननीय मोदी जी सरकार आसवा ठारू प्रत्येक प्रकल्पर अग्रगति आज बढ़ी चली एवं से भली भाव में आमे आज प्रत्येक जो एयरपोर्ट रो डेवलपमेंट से प्रत्येक एयर स्ट्रिप को आमे आगु को नबाई काम करुँच एवं पोर्ट रो डेवलपमेंट बढ़ी चली एवं से आज आमे जो आमर 575 किलोमीटर कोस्ट लाइन अच्छी एवं जो पोर्ट गुड़िकर विकास करने कथा आम करू चलुँच गत सेप्टेम्बर 27 तारीख रे 2025 मसीहार जिते बड़े शेष थर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ओडिशा गस्तर आसीथिले एवं सौभाग्य आमर समस्तंकर पश्चिम ओडिशार प्राप्त होता जे झारसुगुड़ा को से आसीथिले झारसुगुड़ा कार्यक्रम रे जिते बड़े से सारा देश को उद्बोधन दौथिले एवं सेतेबेले 70,000 कोटी टंकार पैकेज को लेकरी से एठी झारसुगुड़ार मंचरू से सारा देशवासी को उद्बोधन देते 70,000 कोटी टंकार पैकेज आनी एवं आमको सौभाग्य प्राप्त होता 70,000 कोटी रु 50,000 कोटी टंका आम ओडिशा पाई से आमको उपहार देकरी से जाइथिले एवं सेथिपाई आपनकर भारत वर्षर आउ गोटे बड़ पोर्ट जहाँकि गंजाम जिलार बाहुदा ठारे
ये प्रोजेक्ट हेबापाई एक नेचुराल पोर्ट करने जहाँकि आज द्रुत गति आगे चली से पाखापाखि 24,000 कोटी टंका इन्वेस्टमेंट केंद्र सरकार तरफ आमहाई ये बड़ उपहार गोटे आसी से भाव में से दिन ही 24,700 कोटी टंकार आउ गोटे प्रोजेक्ट आमको उपहार देते प्रथम थर पर ओडिशा रे एवं बड़ गोटे भारत वर्ष रे शिप बिल्डिंग एवं तार रिपेयरिंग करने आमर जो महानदी मुहाण रे करने एवं ताहा मध्य ताकर प्रकल्प कार्यक्रम ये द्रुत गति रे आगे चली एवं केतेबेले फोर्ट पाई केतेबेले शिप बिल्डिंग पाई केतेबेले पेट्रोकेमिकल्स रो प्रोजेक्ट को आज ओडिशा रे से संपूर्ण भाव में आज आमको 80,000 कोटी टंकार प्रकल्प देइछंती जार कार्यक्रम मध्य आगे चली आपंकर ग्रीन एनर्जी कथा कहवा आपंकर ग्रीन अमोनिया कथा कहवा प्रत्येक क्षेत्र में 16टी सेक्टर रे प्रकल्प को आगे चलवा एवं निश्चित भाव में आज आम 20 लाख कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्प को 16टी सेक्टर रे काम करिवार ताहार एमओयू माध्यम आज आम इंटेंट पाइला परे ताकू आम ग्राउंडिंग को जीवापाई तार समस्त प्रकार प्रस्तुति आम करुछंती अपारेल रे टेक्सटाइल रे जेतेबेले आम पिला माने सूरत जाउछंती आपंकर तिरुपुर जाउछंती तमिलनाडु को कोयम्बटूर आज सौभाग्य कथा जेतेबेले आमे जॉकी कंपनी रो आमे तार शुभ उद्घाटन करने दशरथपुर कटक रे जेतेबेले आमे करने गलु से भारत वर्षर सबुठारु बड़ प्रकल्प सेठी से तार इनागुरेशन करागला से दिन एवं से प्रकल्प रे 5,500 गोटे मात्र 4-5 एकर जगार से प्रोजेक्ट रे 5,500 पिला से निजुक्ति पाइबार सुजोग एवं 3,000 पिला से काम करुछंती प्रोजेक्ट देखला परे मन है अनेक पिला माने खुशी रे काम करुछंती पचारिबार जना पड़िला से मानक भीतर मु 2 जण पिला को पचारिबार से माने कहिले जे कौटी तमे ये काम करुछ खुशी अछ ना या बहुत खुशी अछु कौटू तमे ये काम आगुर करुथिलो ना से कहिले जे आमे सबू से कहला तमिलनाडु रे काम करुथुलु जेते बेल को आमे जानिलु गोटे छोट भौणी पिलाटे से कहला आमे काम करुथुलु जेते बेले ओडिसा रे ये प्रकल्प होउची एवं एठी हमको सुजोग मिलिला तमिलनाडु सुदूर तमिलनाडु रे काम न करिकी समाने आम ओडिसा रे काम करिवार प्रथम थर पई स्कोप पाइले आउ गोटे आमर मयूरभंज रे गोटे सांताड़ी झियो सीए मध्य तिरुपुर रे काम करथला तमिलनाडु रो जोठी के 5,000 ओडिया पिला काम करुछंती से स्कोप नथिला ओडिसा रे विगत दिन मानकरे आज से स्कोप आज पहुंची एणु अपारेल रे आम पिला माने जेबळी भाव रे एठी जो कंपनी माने करुछंती मंचेश्वर रे आपंकर आदित्य बिर्ला ग्रुप रो गोटे प्रोजेक्ट होउची जोथिरे की 10,000 पिला काम करुछंती जॉकी कंपनी रे 2टा प्रकल्प ओडिशा रे हेबो सेथिरे ये गोटे प्रोजेक्ट शुभारंभ करागला आउ गोटे काम चली 9,500 पिला निजुक्ति पाइबे एवं ए स्कोप प्रथम नथिला आज आसी एणु ये प्रकार जो आज भरोसा आसी आम ओडिशा को डबल इंजन सरकार को एवं आमर नेतृत्व नौथबा देशर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व को तांकर संकल्प को तांकर स्वप्न को साकार करने सी जो ग्यारंटर हिसाब से आज ओडिशा पई काम करुचंती आमको जेभली भाव में दिग्दर्शन देकर नौछंती निश्चित भाव में ये 20 लक्षर प्रकल्प 20 लक्ष कोटीर प्रकल्प एवं 5 लक्ष निजुक्तिर सुजोग आम ओडिशा रे ये पूरा हब संपूर्ण हब आउ सेथिपाई टीम ओडिशा हिसाब से आज आम समस्ते काम करुछंती ओडिशा सरकार सहित समस्त नेतृवृंद समस्त टीम आपण माने सरकार सहित एकुटिया सरकार करि पारंते नाही पूरा जमिति टीम इंडिया मोदी जी नेतृत्व रे काम करुछंती ठीक सेमिति टीम ओडिशार नेतृत्व रे आपण मानकर समस्त सहयोग रे ये पूरा हवा पाई जाउछि एवं ए अंचल को मध्य हमें जेबड़ी भाव में भुवनेश्वर अंचल को आमे बीसीपीपीआर अर्थात भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप इकोनॉमिक रिजियन हिसाब से आम गोटे बहुत बड़ अर्थनैतिक अंचल हिसाब से आम निष्पत्ति नेलु केंद्र सरकार को प्रपोजाल देलु केंद्र सरकार 3 मास भितर ताकू एग्जाम करी ग्रहण कले बजेट रे आमको स्थान देले एवं से प्रकल्प हवा पाई मध्य
आमको 5,000 कोटी टंकार प्रारंभिक बजेट रे मध्य स्थान देले। ये भारत वर्षर गोटे बहुत भल एवं बड़ प्रकल्प हिसाब रे आमको ग्रहण करले। सेतिपाई केंद्र सरकार को मु बहुत बहुत धन्यवाद देवी। माननीय मोदी जी को शत धन्यवाद मु दउछि। ये प्रकल्प हवा द्वारा जेमिति आमे कहउचंती हैदराबाद को ग्रेटर हैदराबाद, हैदराबाद सिकंदराबाद एवं ग्रेटर हैदराबाद, हैदराबाद सहरर आखपाख अंचल को सिकंदराबाद को मिसेकरी ग्रेटर हैदराबाद, जो थे कि तेलंगाना स्टेट रो जो तांकर इकोनॉमी रेवेन्यू जो जनरेट होउछि तांको राज्य पाई सेथिरे जो रेवेन्यू मिलुछि से स्टेट को 80% केवल ए ग्रेटर हैदराबाद रे समान को प्राप्त होउछि तेलंगाना को। एवं आज ठीक से भली भाव रे आमे यदि भुवनेश्वर को बेस करी आमे ये बीसीपीपीआर आज आमे करिया पा जाउछु जोतरे केंद्र सरकार हमको आज आशीर्वाद करिसंती। निश्चित भाव रे आगामी दिन रे आज जो ये 4टी सहर भुवनेश्वर, कटक, पुरी एवं पारादीप, ये जो 4टी सहर रे जो भुवनेश्वर रे आज आईटी हब हेबा पई जाउछि, आज सेमीकंडक्टर हब हेबा पई जाउछि। आमे समस्त मंदिर मानिनी सहर बोली कहउतिले, आज ये भुवनेश्वर को मध्य ग्रेटर भुवनेश्वर करबा पई आज आम सरकार जो पदक्षेप नेबा पई जाउचंती केंद्र सहयोग रे आशीर्वाद रे। आज सेति पई भुवनेश्वर को आधार करी भुवनेश्वर रे आज हेबा पई जाउछि CRRR अर्थात कैपिटल रीजन रिंग रोड, जो थे कि खर्दारू आगरे थिबा रामेश्वरम पाखर टांगीरू आपंकर चौदार आगरे थिबा आपंकर टांगी पर्यंत बांकी पट देकरी चंदका जंगल पट देकरी 111 किलोमीटर गोटे रिंग रोड होउची 6 लेन विथ सर्विस रोड सहित केंद्र सरकार आमको 8,300 कोटी टंकार ये प्रकल्प को मध्य अनुमोदन देइछंती। टेंडर सरीकरी काम आरंभ होबा पई जाउछि। या द्वारा सही अंचल भितरे एवं व्यापक भाव में आमको एक जो बीसीपीपीआर रो जो परिकल्पना सहित ग्रेटर भुवनेश्वर चिंता करूछु ता भितरे आईटी हब, ता भितरे आपंकर सेमीकंडक्टर हब, एई निकटरे आमे सेमीकंडक्टर रो प्रोजेक्ट को आमे जतेबेले ले ऑफ स्टोन दलु, जहा कि केंद्र सरकार हमको 2टी सेमीकंडक्टर केंद्र कैबिनेट रे अप्रूवल देइतिले। गोटे 6M रो आमे गत 5 मास पूर्व आमे ताहार ले ऑफ स्टोन देइथिलु एवं आउ गोटे जोटा थिला आपंकर 3D ग्लास सॉल्यूशंस, जहा कि पृथ्वी रो भारत वर्षर प्रथम गोटे सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट रो ताहार आमे ले ऑफ स्टोन देई पारिछु। एवं आज आमे सेमीकंडक्टर रे मतो हब हेबा पई जाउछु। एणु ये प्रकल्प गुड़िक जिते बड़े आमर ये भुवनेश्वर अंचल रे हेबो, भुवनेश्वर गोटे ग्रेटर भुवनेश्वर रे आमर इकोनॉमी आज दिन रे अछि बीसीपीपीआर अंचल रे 22.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर, ये जो 22.5 मिलियन डॉलर रो जो अर्थनीति अछि आमे टार्गेट करछु मोदी जी जो विकसित भारत हम से 2047 रे ये बीसीपीपीआर अंचल ही हेबो 500 बिलियन अमेरिकन डॉलर एवं ये अर्थनीति आगामी दिन में ओडिशा को शक्ति देवा सहित गति देवा सहित एक समृद्ध ओडिशा बनैबारे विकसित ओडिशा बनैबारे प्रमुख भूमिका नेब। ता सहित द्वितीय आम टार्गेट करछु एक शिल्पांचल हिसाब रे सेई पारादीप टू आरंभ करी ढेंकानाल अनुगुल एवं ता सहित संबलपुर झारसुगुड़ा एवं सुंदरगढ़ पर्यंत राउरकेला पर्यंत ये शिल्पांचल को मध्य एक स्वतंत्र भाव शिल्पांचल भाव में स्वतंत्रता आम जो योजना करिछु जो थे कि संपूर्ण भाव में ये केवल ओडिशार नुह भारत वर्षर ये गोटे प्रमुख अर्थनैतिक शक्ति भाव में छिड़ा हम जो कि आमको विकसित ओडिशारू विकसित भारत को आम निश्चित भाव में आगामी दिन में बड़ नेतृत्व नापी जाऊँ। आज ये सद्य उदाहरण होउछि जे आज आम जेभली भाव में आज JSW एवं JFE माध्यम रे आज आमको गोटे बहुत बड़ सबुज संकेत देइछि। आज एभली एक प्रकल्प जो थे कि आपंकर संपूर्ण भाव में JSW आज एभली भाव में ओडिशार से या आग को नौछंती। आउ निश्चित भाव में JSW होउछंती आमर सबुठारु ओडिशा रे
स्टील रे जो नेतृत्व नौचंती तांकर सबुठारु बड़ प्रोजेक्ट केवल ओडिशा रे ही से करिया पय जाउचंती जो बड़ बड़ 4टी प्रोजेक्ट से ए आम ओडिशा रे करूछंती एथिरे लपंगा जो थे आम आज ये अवस्थित अच्छा 15 मिलियन टन फॉर आनम एवं से आपंकर 5 मिलियन टन ये ऑलरेडी एक्जिस्टिंग अच्छी एबे 10 मिलियन टन रो ये प्रोजेक्ट को आगो को नहींकरी से बाहरी 61,000 कोटी रु अधिक टंकार ये प्रकल्प आहरी 16,000 रु अधिक एठी आमर ए अंचल प्राधान्य भाव समानकर भूमिका रहिबो अंचल पिला मानक मध्य जॉब देबार आउ ता सहित आम केन्दुझर पाटना रे 6 मिलियन टन रो 35,000 कोटी रो 8,000 लोकन को नियुक्ति देबार सुजोग ओरपड़ा ढेंकानाल रे स्टील प्लांट पाई 6 मिलियन टन रो सेठी मध्य 35,000 कोटी सहित 8,000 लोकन को नियुक्ति आउ JSW उत्कल स्टील लिमिटेड जटाधार जगतसिंहपुर ले स्टील प्लांट रे जहाँकि सबुठारु बड़ 24 मिलियन टन पर आनम 1,25,000 कोटी टंकार ये प्रोजेक्ट जहाँकि 42,000 रु अधिक नियुक्तिर सुजोग एनु निश्चित भाव में आज JSW केवल एटी स्टील प्लांट करी निजकू सबुठारु बड़ स्टील प्लांट रो स्टील प्रोडक्शन निर्माता खाली हेबे नाही से जो 46 मिलियन टन पर आनम रो स्टील प्रोडक्शन रो भागीदारी हवा सहित जो थे कि 2,56,206 कोटी टंकार इन्वेस्टमेंट सहित पाखापाखि 75,000 जो नियुक्ति सुजोग सृष्टि करने जाऊँगी से निजे को बड़ स्टील निर्माता हवा खाली हो ना तार सहित ओडिशा को भारत वर्षर सबुठारु बड़ स्टील निर्माता राज्य भाव में ओडिशा को से आमर भागीदारी हिसाब से रोचंती ता द्वारा ओडिशा समृद्ध ओडिशा बनईबारे आमको आउ कहीं अटकई पारिबे नहीं ये निश्चित भाव में आज आम से स्तर को जाऊँगी एणु निश्चित भाव में मुझे धन्यवाद देवी आज कार्यक्रम रे आमर JSW एवं JFE जो नेतृवृंद ये समस्ते अच्छा एणु मु निश्चित भाव में आगामी दिन में आम पुणी आउ थे यही भाव में ये प्रकल्प एवं ए अंचल जिते बड़े आसबू निश्चित भाव में संपूर्ण भाव में आम आमर ये अंचल को अर्थनैतिक दृष्टिकोण एवं ए अंचल आम लोकंर जीवन जीविका दृष्टिकोण आम संपूर्ण भाव में एक समृद्ध ओडिशार नेतृत्व ये संबलपुर झारसुगुड़ा अंचल एवं सुंदरगढ़ अंचल निश्चित भाव में नेब आपाई मु आज आम सरकार तरफ जो आम संपूर्ण भाव में काम करने रेडी अच्छू एवं आपण मान सहयोग रे टीम ओडिशा आगामी दिन में एक समृद्ध ओडिशा को आगू नेब एवं आगामी दिन में आम जो आमर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विकसित भारत परिकल्पना करिसेंती भारत विश्वगुरु बनिब आउ सेथिपाई ओडिशा एक प्रमुख भूमिका भारत वर्ष रे आमे नेबा पई जाउछंती स्पेशली टू आवर फ्रेंड्स फ्रॉम जापान आरी गातो गोजाइमास वंदे उत्कल जननी जय हिंद। We are indebted, sir, for your inspiring leadership and for championing Odisha's growth story. Ladies and gentlemen, dignitaries, as we conclude the formal ceremony, it is now my privilege to invite the Managing Director of JSW Cement, JSW Paint, Chairman AkzoNobel India. Also, he serves as the Director on the Board of JSW Energy. Mr. Jindal is here to render the official word of thanks. Please put your hands together, everyone. Good afternoon, ladies and gentlemen. Honorable Chief Minister of Odisha, Honorable Minister of Education, Government of India, Ministers of the Odisha Government, Honorable Chief Secretary, Additional Chief Secretary, Kitano-san, our family member from JFE,
all members of JFE and all members of JSW, ladies and gentlemen, good afternoon. I want to say one phrase which I used when I lived in Japan and I worked for JFE. Watashi wa JFE no shain deshita. I'm saying that I was an employee of JFE. This line is a very symbolic line of the relationship that JSW has with JFE. This partnership, which began in 2009, led to 300 of JSW's engineers go and live for 12 months in Japan. I was one of them. I was lucky enough to live in Tokyo and work in Chiba Works from January to June of 2013, which coincided with the commissioning of our auto-grade steel plant in Vijayanagar in India. From that time, through learning about application engineering, learning about product quality, learning about quality control, learning about product development, learning about just-in-time delivery, to Kaizen, to so many things. One of the reasons why today JSW Steel is India's largest steel company and the world's largest steel company in market capitalization is only due to our partnership with JFE. Today, as everyone has already spoken, it is a historic milestone for both companies, for JSW Steel and for JFE Steel. We take this partnership forward. What started in 2009 is getting cemented in 2026. And as the person from the next generation, I give my commitment to the state of Odisha. I give my commitment to JFE that there will be 100% commitment to make this complex a world-class complex where we not only make high-quality, commodity-grade steel, but we make the best quality of steel that reaches the corners of India and the corners of the world. To Honorable Chief Minister and to Honorable Minister, Government of India, sir, thank you very much. You have really brought a lot of light to all of us by being here, by being present here. Your presence here shows us how committed the state of Odisha is, how committed the people of Sambalpur are in making sure that our friends and our family members from Japan feel welcome here. So thank you very much. Jai Hind, Jai Jagannath. Thank you so much, Mr. Parth Jindal, one of the most inspiring young business leader from India. Ladies and gentlemen, I would be requesting our dignitaries to kindly pose for photo op. The very first group photo, I request Honorable CM of Odisha, Honorable Minister of Education, Government of India, Dharmendra Pradhan sir, Ambassador of Japan to India, Kiichi Ono-san, Chairman JSW, Sajjan Jindal sir, Kitano-san, JFE, Parth Jindal, JSW, Jayant Chaudhary, JSW, Ogawa-san, JFE, to kindly come forward for the very first group photograph. And in the second frame, we would be requesting everyone to join. A big round of applause. Next, I request everyone to come and join us in one frame.
all the dignitaries on the dais to come forward and join us. As the dignitaries are leaving from the dais, I wanted to convey my heartfelt regards to everyone present over here. I request our guests to kindly proceed for lunch. Thank you once again for joining us in celebrating this historic milestone. We wish you a pleasant afternoon, but before leaving, may I request everyone to give another round of applause for this wonderful beginning we have witnessed. Thank you so much. आपण समस्तंकर सहयोगिता सहभागिता एही अवसर को अति अविस्मरणीय करिछि हृदयरु धन्यवाद जणेबाकु चाहूछु। जय जगन्नाथ. On this note, I am Manman Singh signing out. Thank you.